T20 World Cup का पहला semi-final, it is New Zealand versus England, the very big match with two world-class teams and the finalists for the 2019 World Cup. Now both of these teams have some world-class players, and how do you pick your Dream 11 team? Be with us till the end of this video. We'll give you the perfect match combination of bowlers, batsmen and all-rounders. Hello and welcome to another video by CricTips. My name is Manthan, and in this video we are going to do the complete match analysis of New Zealand versus England. And before we discuss the Dream 11 team, let us look at some important statistics. So both England and New Zealand have faced each other 20 times in the T20 International, out of which it is England that has won 13 times and New Zealand has won only 7 times. If you talk about the current T20 World Cup, then England and New Zealand both have won 4 out of 5 league matches and have qualified for the semi-finals, but England lost the last match against South Africa. On the other hand, New Zealand in the last match defeated Afghanistan, crushed the hopes for India to qualify for the semi-finals and made its way to the semis. New Zealand looks in decent form, but yet England has higher chances to win, because in the year 2019-20, when there was a T20 series between these two teams, it was England that won the series by 3-2. Let's see what happens in today's match. Be with us till the end of this video for the Dream 11 team. Now let's talk about the most important part of this video, which is the pitch report. So this match is going to get played in the Sheikh Zayed Abu Dhabi Stadium, जहाँ पे average score है 145. Now T20 World Cup के 10 matches हुए हैं इसी pitch पर, and out of those 10 matches, 6 times the team that chose to bat second has won the match. Dew factor will come into play and toss will play a very crucial role. अगर bowling perspective की बात करें तो this pitch favors the pace bowling more than the spin bowling. इसीलिए जो Dream 11 team आपको suggest करेंगे will be a balanced team, और अगर bowlers की बात करें तो we will prefer more of the pace bowlers than the spin bowlers for the first semi-final. चलिए शुरू करते हैं विकेट कीपर्स से. 2 विकेट कीपिंग ऑप्शन आपके पास, डेवॉन कॉनवे फ्रॉम द न्यूजीलैंड टीम एंड जॉस बटलर फ्रॉम द इंग्लैंड टीम. नाउ डेवॉन कॉनवे को हम सजेस्ट नहीं करेंगे आपकी टीम में, because in the 5 matches of the World Cup he has only scored 83 runs. Will not give you more Dream 11 points like Jos Buttler, and therefore the only wicket-keeping batsman that you can have in your Dream 11 team is Jos Buttler. Now Buttler ने न्यूजीलैंड के सामने अपने करियर में स्कोर किए हैं 176 runs with an average of 120 in this World Cup. Jos Buttler looks in terrific form. He is the highest run scorer for England in this T20 World Cup, जहाँ पे 5 मैचेस में उन्होंने 240 रन स्कोर किए हैं. He opens for England and plays responsible knocks all the way, and therefore he'll give you extra points for his keeping as well. So have Jos Buttler in your team without any doubt as your wicket-keeping batsman. After the wicket-keeper, let's talk about the batsmen. दोनों teams के पास है काफ़ी experienced batsmen, and in that scenario, the number 1 batsman that you can have in your team is David Malan. Now David Malan ने न्यूजीलैंड के सामने 6 मैचेस खेले जहाँ पे उन्होंने स्कोर किए हैं 320 runs. The career highest T20 international score of David Malan has come against no other team but New Zealand, where he scored 103 not out. Malan comes down to bat at number 3, and in this World Cup he has already scored 75 runs. Malan is currently ranked number 2 T20 ICC batsman, so ऐसे crucial matches में you need him for your Dream 11 team. For the second batting option, you have 2 choices. Either you can have Martin Guptill in your team or you can have Daryl Mitchell. अगर Martin Guptill की बात करें तो he is the highest run scorer against England from the New Zealand team, where in the 14 matches he played against England, he has scored 467 runs. स्कॉटलैंड के सामने इनको मिला था मैन ऑफ द मैच अवार्ड, जहाँ पे उन्होंने स्कोर किए थे 93 रन्स विद 6 बाउंड्रीज एंड 7 सिक्सेस. अटैकिंग ओपनर विद अ करियर स्ट्राइक रेट ऑफ 136. इस वर्ल्ड कप में मार्टिन गप्टिल ने स्कोर किए हैं 176 रन्स. ही गिव्स अ गुड स्टार्ट टू द न्यूजीलैंड टीम एंड विल गिव यू गुड ड्रीम 11 पॉइंट्स. जैसे क्रूशल मैचेस में यू नीड एन एक्सपीरियंस प्लेयर लाइक मार्टिन गप्टिल. हालांकि आपके पास ऑप्शन है, यू कैन ऑल्सो हैव डैरिल मिचेल इन योर टीम, जिन्होंने 125 रन स्कोर किए हैं इस वर्ल्ड कप में. इंडिया के सामने स्कोर किए थे 49 रन्स. ओपन्स द बैटिंग फॉर न्यूजीलैंड. नॉट सो गुड वर्ल्ड कप, बट देन either of the 2 New Zealand openers you can definitely have in your team, but we will definitely suggest Martin Guptill. The third batsman that we suggest will be one of my favorites and the skipper for the New Zealand team, Kane Williamson. Now, he has played such crucial matches and has always performed consistently in such big tournaments.
comes down to bat at number 3, and how can we forget the match-winning knock of 40 runs not out against Afghanistan. He looks in decent form. इंग्लैंड के सामने अपने करियर में 210 रन स्कोर किए हैं, एंड ही इन दिस वर्ल्ड कप हैज स्कोर्ड 126 रन्स इन 5 मैचेस. सो केन विलियमसन बतौर बैट्समैन आपकी ड्रीम 11 टीम में. चलिए बात करते हैं ऑलराउंडर्स की. 3 ऑलराउंडर्स सजेस्ट करेंगे आपकी टीम में, और सबसे पहले होंगे लियाम लिविंगस्टन. नाउ दिस प्लेयर हैज टेकन 4 विकेट्स इन द 5 मैचेस ऑफ द T20 World Cup. Because Jason Roy is injured, you can expect Livingston to open for the England team. He can also play a role of a finisher, and we have seen he plays with a career strike rate of 165. साउथ अफ्रीका के सामने 28 रन स्कोर किए थे, और द बॉलर लाइक खगीसो रबाड़ा जो कि एक हैट्रिक ले चुके हैं इसी वर्ल्ड कप में, उनके सामने ही हिट 3 consecutive sixes, हैट्रिक ऑफ सिक्सेस. ही इज़ अ कंप्लीट ऑलराउंडर. लियाम लिविंगस्टन होने चाहिए आपकी ड्रीम 11 टीम में. Apart from him, the England all-rounder Moeen Ali is the player that we will suggest. Moeen Ali was awarded man of the match against West Indies. He picked 2 wickets for just 17 runs. New Zealand के सामने इकोनॉमी है इनकी 5.67. इस वर्ल्ड कप में ले चुके हैं 7 विकेट्स, और साउथ अफ्रीका के सामने बैटिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो 37 रन स्कोर किए थे और खेले थे बहुत ही बड़े सिक्सेस. सो मोइन अली होने चाहिए आपकी ड्रीम 11 टीम में. तीसरे ऑलराउंडर में आपके पास 2 ऑप्शंस, मिचेल सेंटनर और जिमी निशाम. जिमी निशाम की अगर बात करें तो ही वॉज अवॉर्डेड मैन ऑफ द मैच अगेंस्ट नामीबिया, जहां पे उन्होंने 1 विकेट ली थी और ऑल्सो स्कोर्ड 35 रन्स विद बैट. इंग्लैंड के सामने इन्होंने 3 मैचेस खेले इन द लास्ट सीरीज, जहाँ पे ही पिक 2 विकेट्स एंड ऑल्सो स्कोर्ड 63 रन्स. बॉल्स इन द डेथ ओवर्स एंड ऑल्सो प्लेज द रोल ऑफ अ फिनिशर फॉर द न्यूजीलैंड टीम. सो जिमी निशाम को कंसिडर कर सकते हैं आपकी टीम में. Apart from this, the other all-rounder option is Michel Santner. Now, Michel Santner is the highest number of wickets against England. In the 9 matches he played for New Zealand, he picked 16 wickets against England. He picked only 2 wickets in this T20 World Cup, but then he is a very good player. Now, this pitch supports pacers like we said in the pitch report, so we will suggest Jimmy Nishan, जो कि एक pace bowler है, against Michel Santner, which is a spin bowler. बात करते हैं बॉलर्स की. दोनों टीम्स के पास है काफ़ी वर्ल्ड क्लास बॉलर्स. आफ्टर 3 बैट्समैन एंड 3 ऑलराउंडर्स, वी आर गोना सजेस्ट यू 4 बॉलर्स. कौन होने चाहिए 4 बॉलर्स? सबसे पहले फ्रॉम द इंग्लैंड टीम इट हैज़ टू बी आदिल राशिद. नाउ आदिल राशिद हैज़ पिक्ड 7 विकेट्स अगेंस्ट न्यूजीलैंड इन हिज करियर, 4 wickets for just 2 runs against West Indies in the World Cup 2021. Currently ranked number 4 ICC T20 international bowler, और इस वर्ल्ड कप में ले चुके हैं 8 विकेट्स. आदिल राशिद अच्छे डिसेंट फॉर्म में होने चाहिए आपकी ड्रीम 11 टीम में. दूसरे बॉलर होने चाहिए इंग्लैंड की तरफ से, विच इज़ क्रिस जॉर्डन. नाउ अगेंस्ट न्यूजीलैंड दिस प्लेयर हैज पिक्ड 9 विकेट्स. इसी वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के सामने इनको मिला था मैन ऑफ द मैच अवार्ड, जहां पे उन्होंने 3 विकेट्स लिए थे फॉर जस्ट 17 रन्स. इन द 5 वर्ल्ड कप मैचेस क्रिस जॉर्डन हैज पिक्ड 6 विकेट्स, बॉल्स गुड स्पेल्स इन पावर प्ले एंड डेथ ओवर्स. क्रिस जॉर्डन होने चाहिए आपकी ड्रीम 11 टीम में. आफ्टर दीज 2 इंग्लैंड बॉलर्स, द 2 New Zealand bowlers that we suggest will be this successful duo of spin and pace bowling, Ish Sodhi and Trent Boult, without any doubt. Ish Sodhi की अगर बात करें तो मैन ऑफ द मैच अवार्ड मिला था इंडिया के सामने, जहाँ पे 2 विकेट्स लिए थे फॉर जस्ट 17 रन्स. इस वर्ल्ड कप में 8 विकेट्स ले चुके हैं. दिस लेगी इज परफेक्टली कैपिटलाइजिंग द दुबई कंडीशंस. इन हिज करियर ऑफ 62 T20 इंटरनेशनल्स, इश सोडी हैज पिक्ड 81 विकेट्स. काफ़ी अच्छे प्लेयर आपकी ड्रीम 11 टीम में होने चाहिए. एंड फाइनली one of the most successful T20 pace bowlers, Trent Boult. He was awarded man of the match against Afghanistan for 3 wickets for just 17 runs. इंग्लैंड के सामने अपने करियर में 9 विकेट्स ले चुके हैं, और इस वर्ल्ड कप की अगर बात करें तो ट्रेंट बोल्ट इज द हाईएस्ट विकेट टेकर फॉर न्यूजीलैंड, वेयर इन द 5 मैचेस ही हैज पिक्ड 11 विकेट्स. यूजेस हिज fierce pace to his advantage with the new ball. पिच हेल्प्स दी पेसर्स, और इसीलिए ट्रेंट बोल्ट सजेस्ट करेंगे आपकी ड्रीम 11 टीम में. Now, if you are someone who makes teams on platforms like Dream 11 or My 11 Circle, और अगर आपको अपनी टीम के लिए चूज करना है कैप्टन और द वाइस कैप्टन, then here are 2 scenarios from CricTips. Scenario number 1, if New Zealand chooses to bat second, we told you in the pitch report that the chances of the team choosing to bat second are high to win this game. We have seen this happen all throughout the World Cup, और इसीलिए we are going to give you 2 scenarios. In the scenario 1, if New Zealand chooses to bat second, we are going to suggest captain and the vice captain from the New Zealand team, which is Martin Guptill and Trent Boult. Scenario number 2, if England chooses to bat second, then the captain and the vice captain will be from the England team, which is Jos Buttler and Moeen Ali.
सो दोज आर द ऑप्शंस विथ यू. इन 4 में से 2 खिलाड़ियों को आप अपनी टीम में रख सकते हैं पावर प्लेयर्स डिपेंडिंग ऑन हु विन्स द टॉस एंड हु चूजेस टू बैट सेकंड. So that was a complete match analysis and a Dream 11 team prediction video of New Zealand versus England. Do tell us if you like this video and do not forget to share it with all your friends who make teams on such platforms like Dream 11. We also request you to please subscribe to the CricTips channel where we keep bringing you such cricketing content each and every day. We'll see you again on this very channel in this very format. Till then, thank you. Goodbye.